आज मैं आप सबके लिए एक बैल्कनी मेकओवर का वीडियो लेकर आई हूँ। सो गाइस, ये एक रेंटेड बैल्कनी है। रेंटेड बैल्कनीज को हम किस तरह से एक अच्छा मेकओवर दे सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। जो भी हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं उनका हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और इन चीज़ों के थ्रू हम किस तरह से अपनी बैल्कनी को बहुत ही ब्यूटीफुल मेकओवर दे सकते हैं, तो आज हम लोग वो करने वाले हैं। सो गाइस, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल इट्स स्टूडियो विश बॉक्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं आपको अपनी बैल्कनी सो एज यू कैन सी ये बिफोर वॉल व्यू मैं आपको दे रही हूँ। ये मेरे पास प्लेन वॉल है। इस वॉल पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। और ये कुछ ऑलरेडी मेरे पास पुराने चाइम्स वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने ऑलरेडी हैंग कर दिए हैं वॉल के ऊपर। कुछ ओल्ड प्लांटर्स हैं मेरे पास, जो कुछ मेरे ड्राइंग रूम में रखे हुए थे, कुछ बेडरूम में रखे हुए थे, तो उन सबको मैं बैल्कनी में ही ले आई हूँ। बिकॉज़ अभी मैं कुछ नया नहीं लेके आ सकती बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन, तो मैं उनको ही अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं हाउ इट विल गोइंग टू लुक। ये जो भी कुछ आज मैं लगाने वाली हूँ बैल्कनी में, जो भी आप देख रहे हैं, इसमें 90% सब कुछ DIY मैंने ही किया है, जिसमें से कि काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी, तो जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है वो लोग इजीली जाके देख सकते हैं। आई एम स्टिकिंग ऑल दीज एब्स्ट्रैक्ट विद माई डबल साइडेड टेप एज आई एम नॉट हैविंग एनी ड्रिल मशीन विद मी, और इस टाइम पे कोई आने वाला भी नहीं है कुछ ड्रिल करने के लिए। तो जिन लोग के पास ड्रिल मशीन्स नहीं हैं या जो लोग को यूज़ करना नहीं आता है, ड्रिलिंग करना नहीं आता है, वो लोग इजीली इसको डबल साइड टेप से भी स्टिक कर सकते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी लोग मेरे DIYs देखते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैं इस टाइम पे स्टिक कर रही हूँ, ये मैंने अपने ओल्ड कोई पिलो कवर से डिज़ाइन किया था। तो अगर आप लोग के पास भी कोई ओल्ड पिलो कवर्स हैं, आप लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं।
काफ़ी सारे लोगों ने ये मेरा टेबल DIY देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। थैंक यू सो मच। ये मैंने आम पेटी से डिज़ाइन किया था, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth